वहां पर ब्रीडिंग करके वो वापस चले जाते हैं और लगभग जनवरी और फरवरी के आसपास दे लीव द जू प्रेमाइसेस. So they are free ranging birds, free to come in, free to move out. Uh, they are not migratory also. They are resident birds. Resident, but they migrate from during their breeding season. So they are local migratory birds. So let us talk about these magnificent birds, painted straw. Now, why they are an important species? That is something that we would like to understand today. And also, what is their significance in ecological studies? Why are we talking about painted storks and some other similar species when we are looking at conservation in a broader sense? And mostly when we are looking at conservation outside protected areas, which is nowadays, if you understand, India ka lagbag 5 to 6% area is under protected area, which means our national park, biosphere reserves, and wildlife sanctuaries. But a large part of our biodiversity stays outside these protected areas. Even tigers, I can see a very beautiful image of a tiger as a profile pic of the National Zoological Park. But even tigers, there are many tigers which are reported outside protected areas. So what we can do to conserve? So let us not only try to look at this bird from the context of a subject or a particular species, बट हम इस पूरे प्रयास को जो जू की तरफ से भी किया गया है पेंटेड स्टॉक्स को कंजर्व करने के लिए, उनके नेस्टिंग को कंजर्व करने के लिए, और इंडिया में कई रिसर्चर्स के ग्रुप्स हैं, यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए हैं, WII हैं, जो इस तरह के प्रयासों में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर कौन सी स्पीसीज रह रही हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर किस तरह से हम कंजर्वेशन प्लान्स को इंप्लीमेंट कर सकें. सो विद दैट आई विल जस्ट क्विकली स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू. And uh, let's go ahead. So Priyanka, just let me know if my screen is visible to all of. Yes, sir. Screen is visible. Okay. So before we dig deeper into the idea of ecological conservation importance of this particular species, let me first give you a set the context by just simply showing you a picture of this bird. So this is what a painted stork looks like. So beautiful bird with heavy yellow color beak, some tinge of orange on its forehead, and in its feathers, some tinge of pinkish, pink color, and slightly reddish pink color legs. So a lot of colors here and there you will see. I mean, this is an adult painted stork, and with this kind of and a large size bird, a fairly large size bird. So they are definitely, if you see them even flying, there is high probability that you will get identified that this is a painted stork. So let me first briefly give you where the species is, what is the distribution range, किन areas में world के ये painted storks मिलती हैं. So अगर आप इंडिया देखें तो ये इट्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर पेंटेड स्टॉक पॉपुलेशन. जो सबसे बड़ा एक पॉपुलेशन इन बर्ड्स का है वो इंडिया में है. कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में रिपोर्टेड थे पहले, फिर नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, and then there is a small population that is also residing somewhere in many countries in Southeast Asia. For instance, Indonesia has a population now, and we have Cambodia, Thailand. There is a reported breeding population of painted storks in these countries as well. इनफैक्ट एक रिसर्च ग्रुप है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, जिन्होंने अभी अभी एक इंडोनेशिया में एक रिसर्च इनिशिएट की है पेंटेड स्टॉक पे, एंड सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैव कम. वो इस लाइंस में है. मैं जनरल अगर टर्म्स में बताऊं कि जो इंडियन पॉपुलेशन है और जो इंडोनेशिया का पॉपुलेशन है, क्या ये आपस में ब्रीड करते हैं, क्या ये वहां से बर्ड्स कुछ माइग्रेट होके यहाँ आ रही हैं? तो हमने देखा कि नहीं, ये बिल्कुल टू डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस हैं, और इस पे अभी और रिसर्च जो है वो चल रही है. Nevertheless, painted storks, as you can see, I have collected some of these stamps across time. Mostly they are post-independence, and how these painted storks have figured into these postage stamps. एक वियतनाम से भी है, ये 3 इंडियन postage stamps हैं, and there is another one from Vietnam. So it has been a topic or an issue of discussion. इसके अलावा it's a bird on which my PhD supervisor and my guide
a very well-known ornithologist, Professor Abdul Jamil Urfi. He has done phenomenal research on this. In fact, so much so that a whole book called The Painted Stork, which is published with Springer, इस पूरे बुक में इस स्पीसीज के इकोलॉजी और उनके बेसिक इकोलॉजी, उनके बिहेवियर से लेकर के उनके ब्रीडिंग, नेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कंपेंडियम ऑफ all the information that we know about painted storks in general. So when I joined his lab in 2011, I mean there were some areas of work that were still no to be done, and I just took forward some of the work that Professor Urfi has already done. So today, अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू सम आइडिया कि ये बर्ड क्या है, कैसे, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जो हमें जाननी चाहिए, इसका कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस क्या है, आई विल आल्सो ट्राई टू गिव यू a background of my own research that I had done on painted stork, spanning around 5 to 6 years, and which is still ongoing. So just to give you a brief idea, now painted stork conservation importance क्या है इस bird की, IUCN की कैटेगरी में ये नियर थ्रेटेंड में आता है. So as Priyanka said, I am also a member of the Stork ibis spoonbill specialist group in IUCN. We had been working hard to look at the overall population size of painted storks. We just finished evaluating population size of Asian woolly neck stork, and we have been working to compile the overall population size and पूरे world में कितने individuals हैं of these painted storks from various studies from eBirds. There are many sources that we are trying to contact to, and to come up with a rough estimate of how many of these birds are there. Now, where do they nest? Now, something that is very common about painted storks, that they nest in colonies. So they are a colonial water bird. सो नेस्टिंग कई तरह की हो सकती है. एक तो आपने कई दफा देखा होगा, एक चिड़िया है, किसी एक पेड़ में उसने एक घोंसला बनाया, इंडिविजुअल, वो उसे कहते हैं सॉलिटरी नेस्टिंग, कि एक बर्ड कहीं एक पेड़ में नेस्ट कर रहे हैं. बट पेंटेड स्टॉक्स, लाइक मेनी अदर बर्ड्स, इनफैक्ट स्टॉक्स के कई सारे और भी स्पीसीज हैं जो कॉलोनियल नेस्टर्स हैं. पेलिकन्स कॉलोनियली नेस्ट करती हैं, कॉर्मोरेंट्स हैं, आइबिसेस हैं जो कॉलोनीज में ब्रीड करती हैं. सो दिस इज अ कॉलोनियल वाटर बर्ड. इट ब्रीड्स इन कॉलोनीज. Now, most of its colonies, you would see that they are located on these kind of trees which are in water bodies, trees which are submerged in water bodies. एक obvious advantage आपको इसमें ये देखने को मिल सकता है कि they are safe from any kind of disturbance, right? So this is an island kind of situation that you see here, and these island situations give them, provide them safety from all ground predators. जैसे अब कई दफा हमने देखे हैं ऐसे सिचुएशंस में जहां ये पॉन्ड ड्राई हो गया, जहां पे नेस्टिंग कर रहे थे ये पॉन्ड, ड्यू टू सम रीजन पॉन्ड ड्राइज है. अब डॉग्स जो है वो ऊपर चले जाते हैं, दे आर स्टीलिंग एग्स, दे आर किलिंग देयर हैचलिंग्स. सो इस तरह की चीजें होती हैं. सो आइलैंड सिचुएशन प्रोवाइड देम सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी फ्रॉम दैट सिचुएशन. Now, if you look at the nesting population of painted stork, इसको हमने overall दो clusters में बांटा. Now, one is your North Indian cluster, which also includes your western part. So we call it North and West cluster. So North and West India में जो breeding है, अच्छा इन दोनों clusters में difference क्या है कि इनमें breeding time अलग-अलग है. North और West में, as I told you, दिल्ली जू भी नॉर्थ में आता है, तो यहाँ पे भी जो ब्रीडिंग कॉलोनी बनती है वो लगभग अगस्त में स्टार्ट होती है. So this is here breeding continues from August to March. That is your North and West India cluster. Now, South Indian cluster or the South Indian population is entirely different from North Indian population, considering कि यहाँ पर जो breeding है ये जनवरी के मंथ में शुरू होती है और लगभग जून तक जाती है. अब इसका एक कारण जो है वो बड़ा ऑब्वियस है. ये वाटर बर्ड्स जो हैं, they are dependent on fishes. Now, as I mean, all of the zoo staff would know that how the large quantities of fish are to be they require during their breeding season. क्योंकि zoo में एक practice भी है कि जब इनकी breeding थोड़ी peak पे आ जाती है, यानी जब juveniles बाहर आ जाते हैं, तो वैसे इनके parents they make regular flights to Yamuna and they bring in food fishes from there. But zoo में भी एक supplementary feeding की जाती है और कई बहुत अधिक मात्रा में जो है कि in going up to 500 kgs जो है वो fishes जो है इनको दिए जाते हैं. So imagine that kind of requirement, fish requirement that they have when their juveniles are growing. I'll show you a couple of videos also where you will see them how they're begging and how aggressive they are, their juveniles.
when they are asking for food. तो अब पेरेंट्स को इतनी सारी फिशेस चाहिए, so they have timed their nesting along with the rainfall. So this is the monsoon here happens, starts around June and July. जो फिशेस हैं उनके पॉपुलेशन को थोड़ा ग्रो करने में भी एक आध महीने का टाइम लगता है, तो तब तक इनके बच्चे जो हैं वो एग से बाहर आकर के बड़े होने शुरू हो जाते हैं. सो बाय द टाइम आवर वेटलैंड्स, आवर वाटर बॉडीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, दे आर बीमिंग विथ फिश पॉपुलेशन. हमारे ये पेंटेड स्टॉक्स के बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं और अब उनको फिश की रिक्वायरमेंट है. सो नाउ देयर पेरेंट्स विल बी एबल टू fulfill their fish requirement because we have ample lot of food available in nearby wetlands. So ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इनकी इकोलॉजी का ना. यू सी ये कितना स्मार्ट डिजाइन है. आई मीन वैसे देखें तो कहते हैं बारिश के बाद इनकी नेस्टिंग हो रही है, बट यू कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ इवोल्यूशन हैज happened and how all the species have placed themselves over a period of time. जो जिसको अब रिसोर्स पार्टीशनिंग एक इकोलॉजी में टर्म आता है कि रिसोर्स को हमने पार्टीशन कर लिया. आपको अभी चाहिए तो आप अभी कर लेते हैं. अच्छा, इसके बाद जैसे आई मीन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया बिकॉज दिस टर्म केम अप, पेंटेड स्टॉक से पहले ओपन बिल स्टॉक्स की नेस्टिंग होती है, तो उनको फूड कुछ और चाहिए तो वो पहले नेस्टिंग कर लेते हैं, फिर इनको फिश चाहिए तो ये थोड़ा बाद में करते हैं. तो इस तरह की चीजें आपको नेचुरल वर्ल्ड में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेंगी. इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट डिजाइन दैट यू कैन सी इवन इन नेचुरल वर्ल्ड वेयर वी नो अनलेस वी लुक क्लोजली ये डिजाइन सब मिस कर जाते हैं. So, just to give you an idea that what kind of research objectives that we had, मैं ये typical चीजों में नहीं जाऊंगा, but हम एक mainly जो चीज समझना ये चाहते थे कि इनमें नेस्ट सर्वाइवल एक टर्म आती है. नेस्ट सर्वाइवल एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, considering that unless we know that what is the percentage of nests which are successful, we would not be able to understand that what is the population recharge rate. For instance, अगर इस साल 1000 पेंटेड स्टॉक्स ने नेस्टिंग करी, या अगर जू में हमारे पास या 400 नेस्ट बने, केवलादेव में हमारे पास 800 नेस्ट बने, तो इन नेस्ट से कितने जुवेनाइल्स बाहर आए, कितने नेस्ट सक्सेसफुल हुए, कितने नेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए, और उनमें से जो सक्सेसफुल हुए उसमें से कितने जुवेनाइल्स बाहर आए. तो जितने जुवेनाइल्स आए उतना इसका पॉपुलेशन रिचार्ज हुआ. सो हमने क्या किया, हमने कुछ कॉलोनीज चुनी नॉर्थ इंडिया में, जिसमें एक दिल्ली में एक पहली कॉलोनी तो दिल्ली जू ही थी. और एज आई टोल्ड यू, ये कोई कैप्टिव पॉपुलेशन नहीं है, एक फ्री रेंजिंग बर्ड है. बट अब ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द दिल्ली जू. इज प्रोबब्ली द आई थिंक मैसूर जू में भी एक पॉपुलेशन ब्रीड करती थी. So उसके बाद दिल्ली जू आई थिंक इन नॉर्थ इंडिया इज द ओनली जू where a free ranging bird is also coming to breed. So Delhi Zoo है, there is a colony that we discovered somewhere in Chhata. Now something that also come to our attention, KNP or Keolade National Park जो भरतपुर is a well known site for these breeding of painted storks. बट इसके अलावा ये जो लोकल एरियाज हैं आपके आसपास के कंट्री साइड में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, विलेज टैंक्स में, कहीं पे भी आपको ये नेस्टिंग हो सकती है. बट हाँ, एक चीज जो बहुत हमने रेगुलरली देखी कि आमतौर पे इनकी कॉलोनीज में नेस्ट साइट फिडेलिटी एक टर्म आती है, वो काफी अधिक है. इसका मतलब ये है कि अगर वो एक जगह पे नेस्ट करने जा रहे हैं तो हर साल वहीं पे जाते हैं. तो ऐसा नहीं होगा कि आज इस पॉन्ड में नेस्ट कर लिया अगले साल कहीं और चले गए. तो एक नेस्ट साइट फिडेलिटी इनमें काफी है. और more or less most of the water birds, they have this kind of nest site fidelity, so they prefer to visit a colony over and over again, unless they are disturbed with some dramatic change in the habitat. For instance, something happened in Chhata, and that colony has now not seen breeding for at least 4 or 5 years that I know of. I'll tell you what happened there because that story is very important. So ये कुछ हमने कॉलोनीज देखी. एक कॉलोनी हमने कानपुर में बिल्कुल हाईवे के पास में ढूंढी थी इनकी, that was the Kandhi. Then we saw breeding in right in the middle of Lucknow in Hazratganj. So we saw a breeding colony there also. So ये पर हमने इन सब जगह पे लॉजिस्टिक रीजंस थे, तो ये 4 साइट्स हमने चुनी जहां पे हमने समझने की कोशिश की that how painted storks are breeding here. Now ये आपका एक सैटेलाइट इमेजरी है जो आपको आपके दिल्ली जू को दिखाता है. Now this is a road in front of the pond 1, the first pond that we have. अब इस पॉन्ड में 2 बड़े क्लस्टर्स हैं जहां पे ब्रीडिंग होती है पेंटेड स्टॉक्स की. एक तो यहाँ पर है और एक this tree. Now these clusters may have more than one tree. I mean sometimes when large number of birds are there, they're breeding here on these trees. यहाँ पे angulates का एक enclosure है, इसके आसपास भी यहाँ पे भी ब्रीड करते हैं. कई दफा अगर और ज्यादा बर्ड्स आ गए तो इन ट्रीज पे भी ब्रीडिंग होती है. सो यू कैन it's not necessary that they are always breeding in these island situations, the trees which are growing on the islands.
But something which is very unique about this place is that again this is a zoo, but these are not cages. You can see, yeah, these are not cage. No, there's no any enclosure here, but these birds are coming and breeding on these trees. And apart from painted storks, I think ibises, cormorants are also breeding. Pelicans की population है जो breed कर रही है. So there's a lot of activity, especially if you go after August. You can see here. So all the people who who have joined and were looking at this, something you can tell also others also when you visit a zoo. At least try to spread this information that our zoo in Delhi is very unique in terms of having a colony of birds, free ranging birds, birds which are not kept in cage. वो अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं, ब्रीडिंग सीजन में वो ब्रीड करते हैं, उनको एनवायरमेंट कंजीनियल मिलता है और फिर वो वापस चले जाते हैं. और अगेन जो मैंने आपको एक कहा कि नेस्ट साइट फर्टिलिटी इनमें, वो कभी किसी टाइम पे यहाँ आना शुरू किए और जब वो यहाँ आना शुरू किए तो उसके बाद से वो हमेशा यहीं आते हैं. अब अनलेस आपने बिल्कुल हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ कॉन्जर्वेशन कहाँ आता है कि आपने इसको पूरा यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस और आपने पूरा डिस्ट्रॉय. कुछ जगहों पे ऐसा हुआ तो वहां पे ब्रीडिंग खत्म हो गई. बट अगर आप इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर्स को इंप्लीमेंट करके रखें तो यू कैन सी दैट दीज कॉलोनीज कैन स्टे फॉर years and years. So Delhi Zoo was one of our site. Then Bharatpur Keoladev National Park. There is a large area where nesting happens here. Block B has a lot of nesting, and then Block D. ये दो blocks में पहले nesting होती थी. But ये अभी nesting की मैं बात कर रहा हूँ 2010 से. And the number of nests which are made in zoo are roughly around 800, 6 to 800. But if you look back in time, around 84, 86 के आसपास आप देखें, कैलाश श्रृंखला की बुक है, The Garden of Eden, which is on Bharatpur. So he has reported around 3,000 to 4,000 nesting pairs of painted storks in Bharatpur. So ये जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये L block था, N block, they were all teeming with painted stork nests. So historically, we have seen a lot of activity happening in this region. So the other colony that we were monitoring, and we were looking at the Chhata colony. This is a village tank. Now Chhata is a small village close to Mathura, and this is in Mathura district only, and close to Mathura city, around 30 kilometers away from there. And ये village है और इसके पास एक village tank है और उसमें कुछ islands बने. In islands पे इनकी breeding होती थी. And there is another similar village close to Chhata, is Khanpur, where painted storks used to breed. Now Khanpur colony still lives. This colony has as there is no breeding activity seen here in past 6 to 7 years around. So let me just briefly tell you that what we have been looking at and what is this whole idea of understanding nesting ecology or nest survival of painted storks started with. Now, as I told you that North Indian colonies जो हैं यहाँ पे breeding शुरू होती है अगस्त के महीने में, यानी कि this is the time when breeding starts. So we started looking at that at what point of time, how many nests were made. So the maximum nesting activity, now this is nest initiation, यानी कि nest initiation का मतलब ये है, अब जैसे आप वैसे विजुलाइज कर सकते हैं, दो बर्ड्स हैं, वो आए एक ट्रीज पे, उन्होंने एक साइड अच्छी चुनी, वहां पे उन्होंने अपना नेस्ट, पहले तो कोर्टशिप होता है, मेल एंड फीमेल दे डू सम कोर्टशिप बिहेवियर, कोर्टशिप रिचुअल्स हैं, और उस कोर्टशिप के बाद दे फाइंड अ सुटेबल हैबिटेट, दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर नेस्ट, और रफली अराउंड 10 days चला जाता है इनके नेस्ट बिल्डिंग में, और उसके बाद दे मेड, उसके बाद दे हैव लेड देयर एग्स. एग ले करने के बाद 30 days का इनका इंक्यूबेशन पीरियड है. 30 दिनों के बाद जो है उसमें से एग हैच करते हैं और जुवेनाइल्स बाहर आते हैं. अब वो जुवेनाइल्स अराउंड 45 to 60 days तक रहते हैं नेस्ट में, और उस पूरे ड्यूरेशन में इनका पेरेंटल केयर रहता है, which means that the parents will go to the wetlands, they will catch fishes, they will bring fishes and food for the juveniles. So they will take care of the babies and they will ensure that they come to a age, they come to a growing age, and then they will fly from the nest. So ये पूरा पीरियड जो है कोर्स आपका 10 days का नेस्ट बिल्डिंग हो गया, आपका 30 days का अराउंड हैचिंग, और अराउंड 45 to 60 days का पेरेंटल केयर. तो हम यहाँ पे नेस्ट इनिशिएशन की बात करें. दिस गिव यू एन आइडिया दैट हाउ दे ब्रीड अक्रॉस द सीजन. सो व्हाट वी मीन बाय नेस्ट इनिशिएशन इज दैट पहला दफा नेस्ट जो है किसी सबस्ट्रेट पे कब आया. फॉर इंस्टेंस when the birds started putting up their twigs and they started building the nest. So maximum nesting activity is seen here in the month of September. And this is this blue line is for Delhi Zoo, this red line is for Bharatpur,
and then these are Chhata and Kanpur. So as I told you, Chhata and Kanpur are small colonies. वहाँ पे 45, 60, 100 ऐसे nests बनते हैं. Zoo and Bharatpur is a fairly large colony. So here you can see a peak of nesting activity. Even in Delhi Zoo, you can see the peak of nesting activity goes somewhere around the month of September. Now, this is a 5-year data that we have pulled together. So starting from 2011 11 to 16, we have pulled together the data to come up with this graph here. So हम ये जानना चाहते थे कि आखिर जो नेस्ट एज है ये क्या नेस्ट सर्वाइवल को अफेक्ट करता है. देखिए, नेस्ट सर्वाइवल कई चीजों पे वैरी करती है. अब इसमें सबसे बड़ा तो है बायोलॉजिकल फिटनेस. The parents who are making the nest, if they are more biologically fit, the chances of their nest being successful will increase. So हमारी एक hypothesis थी, हमने ये सोचा कि how do we measure the fitness level of birds? Is there a way कि हम कर सकते हैं इसको? Biologically definitely not possible. So we hypothesized and we found in various literature that this is true, that those who are more biologically fit would occupy the primary habitat. जो सबसे अच्छी प्राइमरी हैबिटेट का मतलब जो सबसे अच्छी नेस्टिंग ट्री है. अब जैसे हम बचपन में भी कभी खेलने जाते हैं थे, तो अब अच्छी पिच है, तो जो थोड़े से हमारे दबंग होते थे या वैसे, तो उन्होंने अच्छी क्रिकेट पिच ले ली, तो वहां खेलते थे. तो ये सिंपल सी बात है. दिस इज अ वे ऑफ लाइफ. सो when we looking at the more biologically fit individuals, they will occupy primary habitat. अब प्राइमरी हैबिटेट पहले जाता है, तो हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये जो पीक हम देख पा रहे हैं, ये वो बर्ड्स हैं जो बायोलॉजिकली फिट हैं या जिनकी बायोलॉजिकल फिटनेस बाकी कॉम्पिटिटर्स के अपेक्षा ज्यादा है, which means their survival rate should be higher. So हमने नेस्ट एज एस्टिमेट किया कि आखिर नेस्ट कितना पुराना है, एंड we were expecting that नेस्ट एज should come as a very important factor which can affect nest survival. तो हमने नेस्ट एज एस्टिमेट किया. फिर हमने ये देखा कि बर्ड्स जो है वो इनकी डेंसिटी भी अलग अलग है. हमने ये तो डिस्कस किया कि ये कॉलोनियल वाटर बर्ड्स हैं, ये सभी पेंटेड स्टॉर्क्स की ब्रीडिंग कॉलोनीज हैं. ये दोनों इमेजेस ही भरतपुर से हैं वैसे. सो डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता था, विच मीन्स कि अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे काफी सारे नेस्ट नजर आ रहे हैं. अब ये एक पेयर जो आपको दिख रहा है, वन पेयर हियर इज वन सिंगल नेस्ट. So there are so many nests which are visible in this tree. इस बी ट्री में है बट कुछ कम है, तो यहाँ डेंसिटी कम है नेस्ट की, यहाँ ज्यादा है. तो क्या जहां ज्यादा डेंसिटी है वहां पे सक्सेस रेट ज्यादा होगा या कम डेंसिटी में होगा? बिकॉज कॉलोनीज में ब्रीड करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है. कॉलोनियल ब्रीडिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रोटेक्शन इन नंबर्स. आप अधिक नंबर में एक जगह इकट्ठा है तो कोई भी प्रेडेटर आप पे अटैक नहीं करता है. फिर और भी रीजंस हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर हाइपोथेसिस थी और कई सारी और चीजें आई, but I will not go into detail of those technicalities, just to keep it simple for everybody. So nest density जो है, nest aggregation, these kind of things can affect nest survival. Then we were also looking at colony size. For instance, ये अगर आप दो ट्री देखें, इनमें आप क्या डिफरेंस देख पाते हैं कि ये एक पेड़ तो है, और वैसे ऑल्दो ये कॉलोनियल वाटर बर्ड है, लेकिन इस पूरे ट्री पे जो कि हम एक कॉलोनी मान रहे हैं, सिर्फ दो ही नेस्ट हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. बट बाकी ट्रीज में कई ज्यादा नेस्ट होते हैं, कभी 12, 13, 50, 60, 70 तक जाता है. सो वी प्लॉटेड सबस्ट्रेट एरिया विद कॉलोनी. सो हमने ये रियलाइज किया कि जितना बड़ा सबस्ट्रेट होगा ज्यादा नेस्ट उस पे बनेंगे. सो कॉलोनी साइज यानी कि नंबर ऑफ नेस्ट बिल्ड मेड ऑन अ कॉलोनी will eventually increase in a linear fashion probably with substrate area. But we saw there is some correlation, but not a very strong correlation, because sometimes even in a large tree like this, there are only 2 nests. And sometimes even in a small tree, I mean, these are all choices made in real time, that और उसमें कई सारे नेस्ट बने हुए हैं. सो वो एक वेरिएशन जो हमें दिखा, बट बहुत क्लियर वेरिएशन नहीं था. Now, as far as tree height is concerned, the nesting tree height is also very variable. For instance, we have seen them nesting on large trees of eucalyptus, which is roughly around at height of 25-30 meter. So अब इस हाइट पे ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सकता है, बिकॉज ग्राउंड प्रेडेटर्स तो कभी सोच भी नहीं सकते वहां तक पहुंचने का. हाँ, बट ऑन द अदर हैंड एरियल प्रेडेटर्स विल हैव मोर चांसेस टू अटैक. जैसे काइट वगैरह हैं, उन्होंने एग्स को उठा लिया या फिर उनके जुवेनाइल्स को अटैक किया, तो वो बढ़ता है. We have also seen, this is a very unique colony that we have seen, just one single nest in a one tree. This is a nest made in Kanpur village, village tank in Kanpur. So अब ये भी colony size है, और tree height कितनी है यहाँ पे? Hardly half meter or 1 meter max. So these kind of variation were also there.
रेनफॉल वेरी कर रहा है, क्योंकि एनुअल वेरिएशंस भी हमने देखी 2013 में, जो एक अब जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो रेनफॉल एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है. वी ऑलवेज से दैट with global warming and with the changing climate, the patterns of rainfall are changing. कभी मानसून पहले आता है, कभी मानसून बाद में आता है, कभी बारिश कम हो रही है. So in 2014 we just went to the IMD और हमने दिल्ली का डेटा लिया. So दिल्ली जू, which doesn't mean दिल्ली जू का रेनफॉल का डेटा है, बट ये दिल्ली के रेनफॉल का डेटा है. For Delhi Zoo colony, we are using this data. So what we are looking at here is that 2013 was definitely a much better rainfall year. 2014 में ऑलमोस्ट बारिश बहुत ही कम हुई थी, और वो इतनी कम हुई थी कि इनफैक्ट जू में भी, जहाँ पे आपको पानी वैसे भी अवेलेबल कराया जाता है नेचुरल सिस्टम के अलावा, और फूड भी अवेलेबल था, नेस्टिंग बहुत कम हुई थी और लगभग ना के बराबर हुई थी. और भरतपुर और बाकी जगहों पे तो देयर वाज अ कंप्लीट नेस्ट फेलियर. देयर वाज नो नेस्टिंग एक्टिविटी बिकॉज देयर वाज नो वाटर. As I told you at the beginning only, पानी बहुत जरूरी है. Wetlands में पानी होगा तभी उसमें fishes होंगी, and then only these birds will try to breed because they know they require kgs of fish every day. In fact, one juvenile, एक छोटा juvenile जो है, एक nest में 2 से 3 juvenile आते हैं. एक juvenile को हर रोज half kg fish चाहिए, which means अगर एक parent को एक दिन में, ये अपने लिए नहीं, अपने लिए तो उनको जो food रिक्वायरमेंट है सो है ही, इस अपने जुवेनाइल्स के लिए भी लगभग एक दिन में 1.5 से 2 केजी फिश उन्हें इकट्ठा करना है, which is not an easy thing, and that they have to do daily, right? So imagine the tons and tons of fishes which are required to for a successful breeding of these birds. So uh, changing climate and rainfall not happening, monsoon failure is all going to affect directly the population of these birds. भरतपुर में भी इसी तरह का ट्रेंड हमने देखा, मथुरा में भी ट्रेंड देखा, बारिश हर जगह ही लगभग कम हुई. सो दैट इज देयर. Then the other thing that we realize that temperature, because कई दफा टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है. फॉर इंस्टेंस हमारी स्टडी में ये आया भी सामने कि टेम्परेचर कुड बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बोथ मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर. तो हमने क्या किया, अगेन IMD से बहुत इजीली ये डेटा अवेलेबल हो सकता है और हमने वहीं से लिया. सो एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर और एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज व्हाट वी आल्सो procure, because we saw that breeding period में कई दफा जब extreme winters थे, especially जब temperature भरतपुर में और दिल्ली में 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, we saw many mortality happening, and those were because of extreme weathers, and that mortality were attributed to minimum temperature. So we हमने उन parameters को भी estimate किया. Now this is the breeding chronology of painted stork. अगस्त में start करते हैं. अच्छा, ये नॉर्थ इंडिया के लिए है, because साउथ इंडिया, if you remember, साउथ इंडिया में वहां पे जनवरी से शुरू होता है ब्रीडिंग. तो नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ इंडियन क्लस्टर है, नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडियन क्लस्टर, सो अगस्त के आसपास ब्रीडिंग शुरू हो रही है, एंड इट गोज अप टू दिसंबर. And these are some of the successive steps in which they go through. For instance, egg laying करे उन्होंने 4 to 5 days or a week or so. Nest building, egg laying, incubation 25 to 27 days. Then there are altricial chicks, which means they stay in the nest. Parental care है उनमें, और then they fledge. So just to give you an idea how painted storks breed and the chronology of their breeding. So what we did is, हमारे लिए एक चीज जो सबसे चैलेंजिंग था कि नेस्ट को हमें मॉनिटर करना था. और नेस्ट मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं हम, हमें इंडिविजुअल नेस्ट को मार्क करना था, यानी टैग करना था. अब टैग लगाना पॉसिबल नहीं था, ये वेटलैंड्स में अंदर की तरफ है और हर नेस्ट पे जा जाके तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती. तो हमने एक फोटोग्राफिक तरीका अपनाया. What we did is that we started photographing each and every nest. तो सबसे पहले हमने पूरी कॉलोनी की एक फोटो खींची, उसको एक बड़े पेज पे प्रिंट कर दिया. Then we marked all these nests 1, 2, 3, 4 ऐसे करके chronologically mark कर दिया. And on every visit we were carrying those calendars with us, right? And we just made it printed in the form of a calendar. And then we started looking at, okay, this is the nest 1. This is what we have marked as nest 1. और इसमें हमने उसको नंबरिंग भी कर दी. जैसे फॉर इंस्टेंस दिल्ली जू है तो DZ कॉलोनी 1, so 1 है. नेस्ट नंबर 5 तो DZ 1.5. We named it because we had around 1,000 of we monitor around 15 to 1,600 nests every season of every breeding season. So there was a lot of data that we were actually handling. तो इसको हमने जो पहला नेस्ट था उसको हमने पहले दिन फोटोग्राफ किया. So I just put together one example here. जैसे आप इस नेस्ट की अगर बात करें तो 22/9/2013 तो वो हमने इस नेस्ट की फोटोग्राफ ली 22 सितंबर को. तो ये ऐसा था उस दिन, उस वक्त यहाँ पे हैचिंग चल रही थी. 6 अक्टूबर को हम फिर से गए, हमने देखा कि अच्छा ये अभी भी हैचिंग चल रही है. नो, दे आर इंक्यूबेटिंग द एग्स.
and then new hatchlings could be seen on the next visit. Then 14th November आते आते ये जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, this is called cotton ball stage. You can see, I mean, they look like no fur, एक ball of fur जैसे नजर आते हैं. Then next visit 21st, and you can also see how fast they are growing within 7 days. 14th 11, 21 11. Look at the growth. These chicks were hardly small fur balls. Now they're standing on their feet and they're standing tall on their nests. Then again, after no another few weeks, they are standing tall on their nest. They have started making even small flying efforts. So within two 2 or 2 to 3 months, you can see here the first fledgling. You can see those eyes, small eyes, and neck, heads here. So अक्टूबर से लेकर के आपके नवंबर एंड आते आते तक ये जुवेनाइल्स इतने बड़े हो जाते हैं. So within a span of 1.5 month to 2 month, they will grow phenomenally. Now you can imagine the amount of food that is required. ये इतना तेज अगर ग्रो करना है, योर बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर आपकी इतनी अधिक है, तो फूड रिक्वायरमेंट भी उसी तरह से होगी. सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेस्टिंग दैट वी सॉ, एंड द चैलेंज ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर ईच नेस्ट. We dealt with this challenge by using these kind of photographic method of photographing each nest, and this is just one nest that I am telling you. So this is the code of that nest. We saw that number of nestlings कितने थे, 2 थे. Status क्या था, successful था, which means there were 2 juveniles who came in the nest, and there were 2 juveniles at the end who fledged. यानी 2 juveniles, बिल्कुल 2 eggs आए और 2 juveniles बड़े होके egg से निकल के उड़ गए. तो ये completely successful, which means no, this nest was completely successful. There were nests which were partially successful also, which means कि juvenile तो 3 आए या 2 आए, उनमें से एक को कुछ हो गया और सिर्फ एक ही आगे जाके बड़ा हो पाया. तो they were partial success. They were complete failure also. Those cases were there. So now there are different stages in the painted stock's life. Before I no quickly no wrap up our no discussion with giving you the results of this study, because that would be interesting, and then some conservation issues. I would also like to show you some events, how these kind of these birds, they nest in their colonies. So how nesting happens. So nesting से related कुछ videos है मेरे पास जो uh, they're mostly related to courtship behavior. When the male and the female, they reach to the colony site, what happens? So you can see them, uh, they're very quiet birds sitting on the perch. They will preen each other feathers, and that is one of the courtship behavior that this show. So this is the typical courtship dance that the painted storks make while they making their nest, while mating. So So another aspect of painted stock's life is when the young ones are there in the nest. The parents have to constantly go out in the search of food. So what they typically do is that they're going out to wetlands and they're trying to catch small fishes which could fit into the neck of their babies. So they swallow it, but then they will they reach the nest, they will regurgitate all of it in their into their kids' belly. So and their kids are always hungry. You can see no no the kids are making noise and they will seek food from the parents by doing all those begging display. So
So, I mean, just some aspects of a life of a painted stork. They started building their nest. There was some courtship behavior, and then when they make their nest, they have to go out and do forage for themselves and their juveniles. And the juveniles are very very hungry. I mean, when you and very noisy too. When you go to any painted stork colony, you hear a lot of noise because most of these babies are always shouting and trying to attract their parents to give them food. So, I will not go into detail of this methodology. We use program Mark for doing some statistical analysis of our data. But to give you an idea, this is how we monitored nest. I think I already told you that we this is a colony. We took a photograph. We numbered them one, two, three, four, and say in a serial number. And we provided codes to each nest, and we monitored each of these nests in every successive visit. So what we did is that we wanted to see that if the idea here is that if there is any nest failure happening, at what point of time it is happening, when did the nest fail, when there was a juvenile killed. So if there is anything happening to a nest, through successive visits we were able to record those changes. And apart from the nesting data, we collected data on many other parameters. Like for instance, nest age kya hai, colony type kya hai, tree height and nest height kya hai, colony size, canopy area, density. So बहुत सारी चीजें हमने मेजर करी. फिर हमने कुछ environmental factors जैसे कि daily minimum and maximum temperature, rainfall data, wetland size around the colony. So there are many things that we estimated, and we try to understand that what are these factors, and or which among these factors are actually affecting the breeding or the nesting survival of painted storks. So we made several models. I'll not go into detail of these. Again, these are the top models. We use program Mark nest survival package to deal with the data, and these are the top models that we got. So in spite of going into the technicalities of these models, let me quickly come to the results. What were our results? So what we saw, that first of all, the peak of nesting activity, it varies across large and small colonies. Small colonies में जो है वो nest पहले बनते हैं. Large colonies में जो peak आती है वो देर से आती है. And this is we saw Bharatpur and Zoo. These were all two large colonies. They always peaked close to the first quarter of September. And छाता एंड खानपुर विच वर स्मॉल कॉलोनीज, इनमें जो पीक है वो अगस्त के एंड में ही आ जाती थी. तो स्मॉल कॉलोनीज पहले पीक करते थे और लार्ज कॉलोनीज देर से पीक करते थे. एंड देन वी आल्सो सॉ दैट this is a brief summary of data in 13 and 14 from Delhi Zoo, Chhata, Kanpur, and Bharatpur, and we saw that the nest survival rate is in Chhata, in Delhi Zoo was 67%, Chhata 68, Kanpur 81, and Bharatpur 54. So which means by nest survival estimates or nest survival percentage, what we mean is that using program Mark, we have estimated that what is the percentage of nest which were successful. Now, this is a much complicated term, and I will not go into much of detail of this, because apparent nest success तो बड़ा simple सा है कि अगर 100 नेस्ट बने उनमें से अगर 60 नेस्ट सक्सेसफुल है, 40 डिस्ट्रॉय हो गए, तो 60% आपने कह दिया नेस्ट सक्सेस है. बट ये नेस्ट सर्वाइवल जो हमने एस्टिमेट किया, ये इतना आसान नहीं था, बिकॉज इसमें कई और पैरामीटर्स आते हैं. आप नेस्ट को अपने मॉनिटरिंग इंटरवल कितनी थी आपकी, एंड मेनली द इंटरवल ऑफ मॉनिटरिंग, बिकॉज द फेल्ड नेस्ट आर नॉट observed or not seen, is never seen by the observer or by the researcher with this in the same frequency you see the successful nest. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप आज भरतपुर गए और आपने प्लान किया आप अगले संडे को जाओगे या एक वीक के बाद जाओगे, इस बीच में कोई नेस्ट बनता है और वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है. यू डोंट नो अबाउट व्हाट हैज हैपेंड विद दैट नेस्ट. सो नेस्ट सर्वाइवल रेट, दैट सिंस इनकॉर्पोरेट्स ऑल दोस फैक्टर्स. So we saw that there is a variation in the daily nest survival rate, which means ये variation क्या था, जो early nest थे, they were more successful. As I told you, early nest कौन है? Nests built earlier in the season, they have higher nest survival probability. They were made by those individuals जिनकी biological fitness ज्यादा थी. अब biological fitness ज्यादा है तो उनके nest के survive करने की chances भी ज्यादा होंगी. नेस्ट जो हाई डेंसिटी कॉलोनीज में बने थे, यानी कि जो बड़ी कॉलोनीज थी जिनमें बहुत सारे नेस्ट हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे नेस्ट ज्यादा सक्सेसफुल हुए. और डेली मिनिमम टेम्परेचर जो था वो आपके उसका स्लोप जो था वो पॉजिटिव था, विच मीन्स कि जितना कम होता है डेली मिनिमम टेम्परेचर, मोर्टेलिटी उतनी बढ़ रही थी, और जितना ज्यादा होता है उतनी मोर्टेलिटी कम थी. सो you can see, I mean, in this image,
There are juveniles which are just dead chicks on in the nest. This has happened, a winter mortality. And then eagles feeding on there's a kite feeding on your carcass of a bird. So this is either predation or mortality, because sometimes they feed on dead birds also. So these kind of events that keep on happening. We have seen n number of nests getting failed because of several reasons. But something that we could pinpoint was that minimum temperature जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था, which means winter mortality सबसे ज्यादा थी. प्रेडेशन से भी ज्यादा विंटर मोर्टालिटी की वजह से पेंटेड स्टॉक्स जो हैं वो अपनी कॉलोनीज में, चाहे वो दिल्ली जू में भी हो या फिर आपके भरतपुर में और बाकी जगहों पे, सेम ही तरह के रिजल्ट्स हमने देखे. हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो स्टडी से क्या रहे, वो ये रहे कि जो नेस्ट पहले बनती हैं ब्रीडिंग सीजन में, दे आर मोर सक्सेसफुल. नेस्ट विच आर लोकेटेड ऑन कैनोपीज और ट्रीज विथ हाई डेंसिटी ऑफ नेबरिंग नेस्ट. इस तरह के जो सिचुएशंस हैं जहां पे बहुत सारे नेस्ट बने हुए, इनमें जो नेस्ट बने हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. बिकॉज अगेन प्रोटेक्शन इन नंबर्स, अधिक नंबर में आप हैं, डेंसिटी ज्यादा है, तो यू हैव मोर प्रोटेक्शन हियर. एंड टेम्परेचर, मेनली जो मिनिमम टेम्परेचर है उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है नेस्ट सर्वाइवल के ऊपर. This is what we are this is where these were some of our key findings. Now something that again we did not, because ये study पूरी हो गई around 16-17, we started another study in South India, because we saw that North India का जो ये region है, यहाँ पे हमने देखा कि minimum temperature affect करता है. Now in South India, if you see, there are many colonies. For instance, कोखरे बेलूर में अभी हमने एक project just पूरा किया है, and we have the results will be published very soon. So the minimum temperature का वहाँ पे बहुत ज्यादा dip नहीं होता है. Minimum temperature stays somewhere close to 15 degrees Celsius, which is a comfortable temperature. जैसे आप बैंगलोर के बारे में कहते हैं कि भाई ऐसी सिटी है, आपको कभी वहाँ गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती सर्दियों में. तो with a moderate temperature, the entire South Indian colonies have a different regime altogether. And we saw that minimum temperature was not playing any role. Now, which means temperature, I mean, this is a very broad biogeographic understanding of this of distribution of the species, that painted stocks are probably limited in their distribution because of temperature. Because इसके beyond painted stocks इधर नहीं मिलते. Because अगर आप जैसे जैसे और टेम्परेट रीजन में जाते हैं, ट्रॉपिक्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर और मॉडरेट होगा, बट अगर ऊपर जाएंगे तो आपका मिनिमम टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो इट्स प्रोबब्ली द मिनिमम टेम्परेचर व्हिच इज रेस्ट्रिक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंटेड स्टॉक्स, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेनी अदर वाटर बर्ड्स बियॉन्ड अ सर्टेन एल्टीट्यूड. तो इसीलिए हमने ये सोचा कि भाई ये जो आपका साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का कंपैरिजन हमने करा, और अभी हमने इस साउथ इंडिया के पार्ट को भी कंप्लीट किया, एंड वी विल maybe next time when we get to meet, I'll share some results from South India as well. Threats kya hai? Let us first quickly discuss about some of these threats, not only to painted stocks but a general perception or general threats that all our biodiversity, both within and outside protected areas, are facing, is loss of nesting and foraging habitat for painted stocks mainly. You can see a gale killing 21 painted stock chicks. There are it's a cartoon by Rohan Chakravarti on Green Humor, that once the city of lakes, now the tech capital, Mangalore. So where do we go to breed? So loss of habitat, poaching. I mean, despite of the fact that you think that no wildlife is safe, you can see an image here, an unfortunate image of a person carrying a dead and killed a painted stork and carrying him to feed. So poaching and hunting still, and stealing of eggs is still a problem in many parts of the country. So here we need to communicate with people. We need to communicate with communities that killing one or two painted stock may give them a small amount of maybe benefit monetary or so, but their role in ecological system is enormous. So they're not only regulating the food cycle, the part of a very important part of the food chain. A very recent study has surfaced from WII, Dr. G.V. Gopi and his team has done, that there is a lot of agricultural benefit of having these painted stock colonies in the landscape. So what they saw was that the guano deposits, which means the fecal matters of painted stocks and their chicks, when they are falling into those droppings are falling into the water, and if you irrigate your agricultural fields by that water, the requirement of fertilizers, it reduces drastically, because it is rich in nitrate and phosphate.
So a lot of guano deposit coming from these birds can actually reduce our dependence on fertilizer. तो आप देखें एग्रीकल्चर में भी आपको बेनिफिट है इस बर्ड से. सो इसकी अपने इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो बहुत हैं, वो एनॉर्मस हैं. सो आई थिंक हमें उस पर ध्यान देना चाहिए रादर देन एक या दो बर्ड्स को जो है हम मारें और उसको उससे हमें कुछ बेनिफिट हो. तो ये हम अगर कम्युनिटीज को, लोगों के साथ ये हम शेयर कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है. फॉर इंस्टेंस हमने मथुरा में जिन एरियाज में हमने काम किया, छाता, खानपुर, अकबरपुर, देयर इज अनदर विलेज दैट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन. So we have talked to farmers. We discussed with them the importance of these birds, and they also understood that these birds are very important and has been preserved over a period of time. Now, pollution is another problem. Now, what you can see here is an interesting image of the chhata colony. Now, this is the front side of the chhata colony. This is the rear side. So painted storks की breeding आपको यहाँ नजर आ रही है, साथ में ibis के भी nests हैं. So 13, 14 and 15, can you see what is happening? The water here gets polluted and eutrophication आप देख सकते हैं, आइकॉर्निया ने, जलकुंभी ने पूरे पानी को कवर कर दिया. And same happening in the rear side also. The both side of the lake, the front and the rear side of the colony, in just a span of 3 years, 13, 14 and 15. And these are more or less August के आसपास की photographs हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि अलग टाइम ऑफ द ईयर में हमने ले लिया, सेम ही टाइम पे हमने देखा हाउ पोल्यूशन हैज इंक्रीजिंग डिस्पाइट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स ऑफ डाइवर्टिंग ड्रेन्स. बिकॉज होता ये था कि जो पूरा छाता सिटी आपको एक सैटेलाइट मैप में मैंने दिखाया था, स्मॉल टाउन विलेज ही कह सकते हैं, बट हाँ विद अ पॉपुलेशन ऑफ रफली अराउंड 25,000 30,000 पीपल. बट दो जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है और सब कुछ वो सारा इसी लेक में आ रहा था. तो हमने बात करी लोकल सिविक अथॉरिटीज से भी और उसको डाइवर्ट करवाया, बट इसके बावजूद भी कई सारी चीजें हुई. अल्टीमेटली वी कुड नॉट डू एनीथिंग. एंड यू कैन सी बाय द एंड ऑफ 15 16 बिल्कुल नेस्टिंग यहाँ पे खत्म हो गई. सो दिस इज जस्ट अ डेटा फॉर पेंटेड स्टॉर्क, व्हाइट आईबिस, एशियन ओपेलबिल एंड ग्रे हेरॉन, जिनकी ब्रीडिंग यहाँ पे होती थी. सो फ्रॉम 13 14 जहाँ पे 50 नेस्ट बनते थे, दे 15 16 में यहाँ पे सिर्फ 10 नेस्ट बने. और ग्रे हेरॉन की तो नेस्टिंग बिल्कुल ही खत्म हो गई. और 16 17 18 के बाद हमने देखा, 18 के बाद मेनली, कि ऑलमोस्ट ऑल माइग्रेटरी बर्ड्स, ऑल ब्रीडिंग बर्ड्स, चाहे वो पेंटेड स्टॉक्स हो, आइबिस, ग्रीन ओपन बिल, ग्रे हेरॉन्स, all of them were gone and this nesting site was completely deserted. So pollution can be a very real problem. और वो बहुत long term नहीं, short term में ही 3 सालों में ही हमने इतने changes देख लिए. So you can imagine these kind of things happening. The other thing that happens is urban expansion. Now this is painted storks are very they are very uncertain chaps. तो ये कहीं भी ब्रीड कर सकते हैं. तो आपको अब एक तो सिचुएशन आपने देखा, आइलैंड सिचुएशन, पानी के बीच में ट्री है और उसके ऊपर ब्रीडिंग कर रहे हैं. बट हमने कुछ कॉलोनीज ऐसी भी देखी. दिस इज कॉलोनी ऑफ, दिस इज जीटी रोड, ओल्ड जीटी रोड, जो आपका यहाँ कानपुर की तरफ जाता है. और कानपुर देहात से थोड़ा सा पहले ये कॉलोनी बनती है. कांधी करके एक विलेज है उसके पास में. तो ये बिल्कुल हाईवे के पास में ही था ये ब्रीडिंग कॉलोनी. यहाँ पर यू कैन सी दीज नेस्ट्स हियर. आई हैव जस्ट zoomed in. So there is no island situation here. In fact, the tree on which they are nesting is also used for a barber, as a barber shop. So roadside barber shops होते हैं छोटी जगहों पे, तो वो भी यहाँ पे था. तो इस तरह के ह्यूमन डिस्टर्बेंस के बीच में भी they are nesting. Although height काफी ज्यादा है, so probably they are having the benefit of the height of the tree, but they are nesting in these situations also. Now this colony is completely gone. What happened? The road expanded. So ये जो 6 लेन हाईवे बनने लगी जीटी रोड को तोड़ के, तो फिर ये रोड चौड़ा हुआ, ये सब पेड़ वेड़ कट गए, and now these birds have dispersed. So these colonies and these habitats will keep on losing them with expansion of urban areas. But the idea is that there are some development that we cannot stop. I mean, एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा कंजर्वेशन प्रपोज करने वाले लोगों के साथ रही है. दिक्कत तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व, कि हम बिल्कुल ब्लैंकेट अपोजिशन करते हैं. वी ब्लैंकेटली अपोज that okay, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए. And you can see we cannot conservation, if it starts becoming impediment to growth, to economic growth, conservation takes backseat always. So over a period of time, and although this is not an ideal scenario, but that is the reality. So it's better that we talk about conservation happening side by side with economic. There need to be a balance in conservation and economic growth. So ठीक है, आप expansion हो रही है, we should और ये कॉलोनी अगर यहाँ से, वैसे कई उपाय किए जा सकते थे कि इस कॉलोनी को बचाया जा सकता था. Maybe divert the road a little bit, maybe make a flyover from here, right? Flyover से भी खैर बात नहीं बनती, but हाँ, road diversion was one option. अगर वो नहीं किया गया, let us try to focus more on other areas, because these birds, it's not like that they are dead.
they will try to move to some other colonies. But then you need to have alternative habitat. अगर आपके पास वो alternative habitat भी नहीं है, then the population of these birds, and as a matter of fact any other wildlife, will start declining. So that's briefly, no, I wanted to talk, give you some idea about painted storks, their nesting in North India, and how Delhi Zoo has, over a period of time, become a very important center for breeding of painted storks and free ranging birds. So I mean, I think it's the अभी इस वक्त में भी breeding चल रही है. So those of you who want to visit the zoo, I think there are some no days on, or zoo is open for visit some visitors at least. So you can go to the website, see when and how you can visit the zoo. So go and take a look, and I'm sure that you are going to enjoy these birds there. So I would like to thank many people, University of Delhi, DST for funding, Waterbird Society USA for recognition of some of our work, and my some of my friends who helped me a lot during these, and my guide who during the studies. And also there are many students who have been involved with me past 2012 2017 in looking at these birds. So thank you very much. I will just stop sharing my screen with you, and if there are any questions or anything that. So we have received a few questions. Okay. First question is why some older ones, like you also have told me that the older ones loses some of the hairs from the head, and that the hairs goes backwards. So is there any reason behind it? Now, why do we all lose hair? I mean, it's the same reason. Okay. So So receding hairline is just a sign of aging, right? You can see that in me. You can see that in anyone else. So when they grow old, their hairlines do recede. There are some instances where birds lose their feathers abruptly. I mean, they could be reason of poisoning because of heavy metals. जो कुछ स्टडीज ने ये शो की हैं कि हेवी मेटल पॉइजनिंग की वजह से दे स्टार्टेड लूजिंग देयर फेदर एब्रप्टली. But what that is, what is a matter of concern for us. I mean, those who want to know. अगर कोई आपको यंग बर्ड दिखती है जो बाकी अपने सभी बिहेवियर में तो यंग है, मतलब यंग एज इनकी वेरी एजाइल and is looks like a young bird, but then with feathers gone, then it's a matter of concern. But if old chaps are losing their no hairs and feathers, then it's just time that has happened to them. okay, sir. Any more? I don't have any more questions. Or Yeah. one question can be, sir. We have two ponds, like you showed. In one, there is there is completely no nesting of cormorants. While in another another pond, we have seen that the cormorants and painted socks are nesting just side by side. They call mixed And colonies. Huh? yeah, so why is it so that one pond is completely devoid of the other species, or the another one has both the species? Is there can be some ecological relation? See, there are two things here. So one thing that you need to understand, जो हम